curtains down on Delhi poll campaign. Final push for BJP, AAP and Congress. Can BJP stage a comeback in capital? Will AAP win Delhi ka dil again? Will Congress spring a surprise? केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, अस्पताल में मिलेंगे आपसे। Delhi votes, the final countdown. Top focus on 6 p.m. Prime. Good evening. You're watching 6 p.m. Prime here on India Today. I'm Akshita Nantagopal. It's officially curtains down on a high-octane Delhi campaign, reflective really of what's at stake for every political party involved, for the Aam Aadmi Party, the BJP and the Congress. We'll get you highlights of the campaign that we witnessed in the last 24 hours and really how things could pan out when Delhiites come out to vote on February 5th. Let's begin. And as the clock strikes 6:02, campaigning has officially come to an end in the national capital. It's curtains down on what's been an extremely intense campaign for the national capital. Kejriwal, in the last leg of his campaign, which was in Kalkaji for Atishi, has predicted 55 plus seats for the Aam Aadmi Party. Amit Shah held 3 rallies today in Delhi at different locations, rooting for the candidate, and in every single one of these rallies has urged voters to oust Aam Aadmi Party. Priyanka Gandhi, the Congress, seeing a big chance this time in Delhi and going ahead and not holding back and attacking the Aam Aadmi Party. Priyanka also led a massive roadshow in the national capital for the Congress. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। So Arvind Kejriwal, as per his math, is saying the Aam Aadmi Party is winning 55 plus seats out of 70 in the national capital. Will that actually happen? Well, the BJP and Congress have been working hard to ensure it doesn't, but we will know on February 8th. In 2 days from now, on February 5th, Wednesday, is when the people of Delhi finally have their say. You've heard from every political party. You've heard what each of them has to offer, what they've promised. Now it's over to the voter of Delhi. We will get you all of our reporters who've been out there on the ground, listening to what the voters have to say, hearing what these political parties have been doing, what their strategy has been in this election campaign, this election season. But now the politicians sit back and it's the voters who do the work, who pick who they want. Let's take this across to Piyush Mishra, who's joining us live from Delhi. We have Amit Bharadwaj, who tracks the Aam Aadmi Party for us, and Maushmi Singh, who tracks the Congress. Good evening to all of you. You can all finally heave a sigh of relief, at least for 24 hours, as the campaign has come to an end. I'll start with you, Amit. For the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal saying 55 plus seats. What's the math? How have they come to that number? Amit, we're not getting your audio. We're going to fix that line with you. But in the meanwhile, let me focus on what the BJP is doing and bring in Piyush Mishra on that. Piyush, for the BJP, they're really counting on anti-incumbency working in their favor. What really has the BJP focused on through their campaign? What has been their strategy in ensuring they can kind of build on that anti-incumbency in Delhi? Well, absolutely, Akshita. Since day one, we have seen how BJP has been building a narrative against Arvind Kejriwal. Especially, they are very much hopeful that people in Delhi are going to vote
against Arvind Kejriwal's government. For the first time, we are also seeing how BJP fought this election unitedly. We did not see any camp coming out in open and claiming for the topmost post. BJP feels that this time people in Delhi are going to vote against Arvind Kejriwal, not for BJP, and that is why BJP is very much hopeful. The sources within the BJP have also told us that BJP will be forming a comfortable majority government in Delhi. They are very much hopeful of getting seats around 39 to 45. This is what the top sources in BJP have told us. Okay. BJP also very much hopeful that out of 22 seats in Outer Delhi, BJP will be getting around 10 to 12. They are also very, very, very confident of New Delhi conference. They are saying that Arvind Kejriwal is going to lose badly. In fact, the seats like Kalkaji, where Ramesh Siduri and Atishi are the top contenders. The Alka Lamba is also there from Congress. Here also BJP is very confident. So BJP this time seems to be very confident. So In fact, BJP I saying also 39 I to also 45 is what Piyush is telling us, including seats like Jangpura and New Delhi, where they believe they stand a strong chance of defeating the heavyweights, the bigwigs, if you will, of Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. Amit, we hope we have your audio now. Tell us really how Kejriwal has come to the number of 55 seats. We have been asking him this question that what's your prediction for 2025 battle? Because Arvind Kejriwal is known for writing it down on the paper that, look, this is the number of seats we are going to win in the Vidhan Sabha election, or this is the number of seats the BJP will be winning in Lok Sabha election. This time around, he was shying away from writing that number, giving justification that the jail, tenure and the Gita has made him more modest. But now, he eventually says that 55 is the number. What we are given to understand is that the Aam Aadmi Party believes that there are 35 seats that they are comfortable on. The victory margin would be comfortable, and these were not the seats where the Aam Aadmi Party had to put a lot of effort. In the past 1 week or 10 days, as we had reported on India Today as well, there were nearly 20 to 25 seats which, as per Aam Aadmi Party, were the thin margin seats, and that is why the Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal was holding rallies in these constituencies instead of, going all out and doing aggressive road shows. So this time around, there was a change in the strategy. Like the socialist parties, like the communist parties, Aam Aadmi Party chose street corner meetings, which meant that 500 to 5,000 people, irrespective of the number of listeners who are supporters who have gathered at the street corner, you are holding your Jan Sabha, your rally, so that your message reaches to each and every household. At least it magnifies and multiplies. And eventually, when they were satisfied that, look, these seats have been now consolidated, the margin has been managed in a better manner, in the positive sense, that's when Arvind Kejriwal switched to his Jan Sabha plus road show technique. But eventually, as the campaign has been wrapped up, Akshata, I must say, this is a referendum on Arvind Kejriwal, a litmus test that Arvind Kejriwal has put himself on. Now, it is for the people of Delhi to choose whether he is returning as Chief Minister of Delhi for the 4th time, or will the BJP come to power eventually after 3 decades. It's largely being seen as a two-way battle between the BJP and the Aam Aadmi Party. But perhaps the biggest problem for AAP could be from the Congress. Maushmi, what do you think really of the Congress's chances? They've not shied away from attacking the Aam Aadmi Party. There were a lot of questions about whether the Gandhis would come out, hit the campaign trail, would target Aam Aadmi Party, would target Kejriwal. They didn't shy away from doing that. A lot of reports suggest that the reason they're doing it, Maushmi, is because they believe that they can actually gain at the cost of the Aam Aadmi Party. That's right. And, somewhere perhaps the Congress is looking at a long-term gain and a long-term goal rather than an instant one. And that's one reason that you saw them not come in the second rung or the first rung of the election campaign. You saw them really coming in the last leg and, carpet bombing on the core seats that they were looking at, which is essentially a handful, Akshata, considering that they have a lack of organization, a drought for a very long period ever since the Aam Aadmi Party has taken over their traditional vote bank. So they assess their strengths and weaknesses, and after that SWOT analysis, we had even Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi focus on, campaigning twice
at some seats like Simapuri and Mustafabad and Badli and even New Delhi constituency, which is a prestige battle for Kejriwal. They pitched in their best face, the biggest face that they have in Delhi. So I think they knew that the role was cut short because of their own weaknesses, and they played their part. And if they can they think they would pat their bags if they can in fact impact the results, even by stopping the Aam Aadmi Party for leaving the future battles to be fought with the BJP in Delhi. Interesting to see what happens for the Congress. They're counting on pushing their vote share to a double digit. They're just under 5% right now. Let's see if that happens. Thanks very much, Piyush, Amit and Moushami, for those details. We'll keep, of course, coming across to you because the battle for Delhi is literally just kicking off now. You've seen what the politicians have had to say. It's now the voters' turn to have their say come February 5th. Let's run you through what's happened in the last 24 hours. The last leg, the last-minute campaign of every political party who pulled out their heavyweights, bigwigs. They were all out there on the streets of Delhi, focusing on seats that matter to each of these political parties. The last and final lap in the capital clash. The BJP, Aam Aadmi and Congress, big guns boomed in a final push to woo Delhi voters on Monday as campaigning ended. Home Minister Amit Shah hit the campaign trail, taking aim at the Aam Aadmi Party's governance model, accusing them of betraying Delhi. जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। The BJP's top ministers and leaders also hit the streets in a bid to script a comeback in the capital. जनता की आंखों में धूल झोंकना यह उनकी बड़ी पुरानी आदत है, उनकी यह फितरत है और इस फितरत को दिल्ली की जनता अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है। Foreign Affairs Minister S. Jaishankar attacked the Aam Aadmi Party, claiming he's ashamed of Delhi's lack of amenities. मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता। पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10 साल में कहीं दिल्ली पीछे रह गया। Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal hit back, accusing the BJP of copying the AAP schemes. मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर। तुम चिंता ना करो, सारा इंतजाम हो जाएगा पैसे का। Kejriwal claimed BJP workers attacked Aam Aadmi Party workers, women volunteers and journalists, releasing a video to back the claim. पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। वो वाल्मीकि समाज के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कल वाल्मीकि समाज के हजारों भाइयों ने वहां पे आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया, अरविंद केजरीवाल को वोट ना देने की अपील करी, तो वो उनको गुंडा कहने लग गए, उनको क्रिमिनल कहने लग गए। जो बच्चे गारंटी है। Meanwhile, Prime Minister Modi hit out at the Delhi education model in an interaction with students. मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद
बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra hit the campaign trail too for the party. मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। Who wins power in Delhi, many believe will depend on how the Congress performs. Delhi votes on Wednesday with the results on Saturday. Bureau Report, India Today. So what will it take for the BJP to gain an upper hand in this election? If you look at really the 2020 results and the vote share particularly, and just note down these numbers clearly of the vote share and how it translated to seats. Essentially, among the SC and Muslim influenced seats, the BJP didn't do very well, and that reflects the fact that they got 0 seats. But let's say about 6% is exchanged here. 6% of vote share moves from the Aam Aadmi Party to the BJP in each of these sectors. So let's get to the next plate then of what that will look like. Then you see the BJP actually standing a chance, in the sense that then the BJP's number of seats go up. So what you're looking at of a 62 versus 8, that will then become a 34 versus 36. There's the breakdown there for you, where we've essentially plus 6% for the BJP and minus 6 for the Aam Aadmi Party. So in the SC seats, about 12 seats there, it becomes then 9 for the AAP, 3 for the BJP instead of all 12 for the Aam Aadmi Party. In Muslim-influenced dominated seats, 54% and 39%. Again, we've added 6% of the vote share to the BJP and taken it away from the Aam Aadmi Party, in which case the BJP get 3 seats and the AAP 6. Similarly, in others also, if you look at that breakdown, where again we've taken 6% of the vote share from the AAP and put it in BJP's kitty, that number then becomes 30, in which case this will be a very, very close battle, 36 versus 34. But at this point, a big question mark over what kind of a role the Congress actually can play. If you're just going to be quite simply taking away vote share from the Aam Aadmi Party and putting it in the BJP's kitty, then maybe you could see this kind of a scenario. But remember that between the AAP and the Congress, it will be interesting to see, because AAP has gained because of the Congress going down. So if the Congress comes back up, it could spell trouble for the Aam Aadmi Party. Now, another aspect, and this is where, of course, caste politics comes into play in Delhi. Look at the numbers between 2008, 2020, and also what it looks like with regards to how many of the elected MLAs are from different communities. You see in the Jats, the number has gone down. The Jat vote in the last few years has been with the Aam Aadmi Party. There's also been a reduction if you look at the number of Brahmin MLAs as well. From 14, it's gone down to 6 in 2020. The BJP is counting on getting those numbers to change, and therefore, as far as really the Brahmin representation is concerned, they're counting that because of that particular community coming in their favor and them also fielding more from the community, that will work in their favor. Let's run you through some of the reactions that have come in today. What made headlines in the national capital in the last 24 hours in this high-octane battle and campaign that we witnessed between the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress. भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते।
ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता। पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10 साल में कहीं दिल्ली पीछे रह गया। कंस्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के जरिए। So what you heard also from all the politicians is some of the issues that they've been touching upon on the polluted Yamuna, corruption, Sheesh Mahal, which the BJP has been referring to repeatedly. In our next report, we break down for you exactly what were the 5 issues that made this Delhi dangle more toxic. Countdown to Delhi poll dangle has begun. From Yamuna to CM House to illegals, battleground Delhi is heating up. And it's toxic politics over Delhi's lifeline that's dominating the discourse. Arvind Kejriwal did promise to clean Yamuna in his first poll promise a decade back. 2025 was the deadline promised. While he looks for an extension on that promise, the opposition finds the biggest opportunity to corner him. अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। Kejriwal has opened a cross-border war with the neighbor. इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। यही वो यमुना जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था। From Yamuna to Sheesh Mahal, AAP continuously finds itself on the back foot. Liquorgate allegations were a constant thorn on the side. उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। To counter, AAP did what it does best. Announce a slew of freebies in its manifesto. This started a war of promises. The voters in Delhi have 3 baskets of freebies to choose from. हर महीने बिजली के 5,000 रुपए बचा रहा हूं। हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपए महीने बचा रहा हूं। हर महीने महिलाओं की बस यात्रा के 2-2,500 रुपए बचा रहे हैं। इलाज के 5,000 रुपए बचे, 20-22,000 रुपए महीना एक परिवार को फायदा हो रहा है। गलती से कमल का बटन दबा दिया,
तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। But all of it is for the voters of Delhi. And that's where BJP has found another issue to pin AAP down. Alleging that illegal immigrants are part of the voter list. Both parties are accusing each other of illegally settling in Bangladeshi and Rohingya voters. दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को यहाँ बनाने का काम किया है। इनके विधायकों की मोहर और हस्ताक्षर के बाद ऐसे तमाम लोग पकड़े गए हैं जिनके फर्जी वोट्स बनवाए हैं। लगातार देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पे विदेशी कब्जा कर रहे हैं और यही इनका आधार है कि वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना। बीजेपी के एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट, नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, बीजेपी भी मिली हुई है। सांसदों के घरों से 30-30, 40-40 वोट, और डीएम, लोकल डीएम जो है पत्रकारों को उसकी जस्टिफिकेशन देगा, तो चुनाव की प्रक्रिया में सैंक्टिटी कहां बचेगी? Which of these poll issues will resonate with the voters? Delhi will decide on February 5. Bureau Report, India Today. The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory. Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. Big budget showdown in Sansad. Fireworks during Rahul's Lok Sabha speech. This constitution. Caste, Constitution, China Raga. Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. Union Mantri Rijiju counters Rahul Gandhi. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement. Stormy Parliament budget session. As we get you all the reactions to Rahul Gandhi, the leader of opposition speech today in the Lok Sabha, let's get you an exclusive. Finance Minister Nirmala Sitharaman has slammed Rahul Gandhi over his remarks in Parliament, particularly on what he said about unemployment rates, about the economy, and saying that China will beat us. Now, Finance Minister Nirmala Sitharaman has responded, saying that the economy was in doldrums under Congress's rule, and this exposes Rahul Gandhi's hypocrisy. Let's get you excerpts of that exclusive conversation. जनरली अभी तक हमने वो बातें की जिसको लेकर आपकी तारीफ भी बहुत हो रही है, सराहना हो रही है, जो कि रेयर होता है एक वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद। लेकिन अब मैं उन चीजों पर आना चाहती हूं जिसको लेकर आपको घेरा जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इसमें राहुल गांधी की एक बात जिसमें वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरकार का इनिशिएटिव काम नहीं कर पाए लेकिन इस पर, और वो कहते हैं कि यूपीए शासन के समय भी जिस तरीके से जो यूथ के मुद्दे हैं वो हम नहीं एड्रेस कर पाए, रोजगार को नहीं एड्रेस कर पाए, एनडीए सरकार भी अपने इस कार्यकाल में भी नहीं एड्रेस कर पाई है। वो इतना कोहेरेंटली इस आर्ग्यूमेंट को बोले क्या? मैं लब्बुल आप बता रही हूँ उनका। हाँ, श्वेता जी का वो उनके बातों का थोड़ा मसाला ऐड करके आप इधर रख रहे, नहीं, वो गलत है, क्योंकि उनके समय पर वो एज तो ही इज गिविंग अ कंसेशन, एक बात कंसीड कर रहे हैं, हमारे समय पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। नो, कुछ नहीं हुआ भाई, उस समय इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हुआ था, बैंक्स का सरासर नुकसान में पहुंच गया था, इंडस्ट्री लीडर्स ऐसे बंद करके कारखाना बैठ रहे थे और उनके अपने पैसा को बचाने के लिए शायद बाहर भी चले जा रहे थे, और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतना खराब,
बैंक का बैलेंस शीट उसके कारण खराब। इस अवस्था पर जॉब नहीं दे पाए, ऐसे कंसीड करने का मतलब ही नहीं बनता। पूरे इकोनॉमी को डोलड्रम्स में, इतना बुरी हालत में छोड़कर जाने वाले नेता आज सिर्फ जॉब नहीं दिया मैंने उस समय, बात बनता है क्या? पूरे इकोनॉमी का हालात उस समय का सोच लीजिए। आप बॉटम से 5वें स्थान पर थे, अब ऊपर से 5वें स्थान तक मोदी जी ने उठा करके इकोनॉमी को उधर बिठाया। नेक्स्ट 2 years वी विल रीच 3री स्थान। एक लीडर जिनके 10 साल के कार्यकाल में नीचे 5वें स्थान पर पहुंचा इकोनॉमी, वो आज खड़े होकर के इतना गंभीर बात को इतना आसानी से बोल रहे हैं। इन सबको भी जवाब देने के लिए बोलिए उनसे, बैंकों के हालत क्या था, बैंक्स के कारण कितना नुकसान हुआ इस इकोनॉमी को। उनके हाथ में पैसा नहीं था, उनका संपत्ति पूरा खो गया और लोग उसको उठा करके इकोनॉमिक ऑफेंडर बाहर चले गए। उनके समय पर जिनको बैंक से बेनिफिट मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब चले गए। आज मैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में जवाब भी दी हूं कि ईडी के द्वारा ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके कार्यकाल में पैसा बैंक से उठा करके भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनका संपत्ति को हम कॉन्फिस्केट करके कोर्ट के द्वारा अच्छा ऑर्डर निकालने के बाद आज कम से कम 18 से 22,000 करोड़ तक बैंक को रेस्टिट्यूट किया है। रेस्टिट्यूट मतलब बैंक को जितना पैसा उनका ड्यू है उसको वापस कर रहे हैं। ये हालात है उनके 10 साल के। सो उनको औकात नहीं है बात करने के लिए। इफ आई कैन यूज माई टूटी फूटी हिंदी, ही हैज नो qualification or right to talk about the economy, having taken our Indian economy to the bottommost pit. आप उनके समय के बिजनेसमैन की याद दिला रही हैं, वो आपके वक्त के बिजनेसमैन की। उन्होंने कहा कि आप कंजम्पशन ड्रिवन आप मार्केट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर आपका फोकस नहीं है। कंजम्पशन से किसको फायदा होगा, वो फिर उस लिस्ट पर आए, अडानी, अंबानी, टाटास, बजाज। उन्होंने कहा जिनको कंजम्पशन से फायदा उनको होगा। और मतलब आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना रहे हैं, वो चीन बना हुआ है जो हमारे माथे पे बैठा है। 4000 इसीलिए जाकर के इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मर प्रेसिडेंट और माता जी के साथ जाकर के चीन के साथ एमओयू साइन किए क्या राहुल गांधी जी? चीन सब कुछ बना दिया, चीन ने, आप नहीं आपके कार्यकाल में आप जाकर के उनसे एग्रीमेंट किए ना, उसमें क्या है भाई, वो तो खुलासा करो। फिर आप वो खुलासा नहीं करेंगे, चीन ऐसे हो रहा, चीन वैसे हो रहा, चीन। इनके दादाजी के समय इफ आई टॉक दे विल इमीडिएटली से वो नेहरू जी आपके पेट एनिमी है, इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, तब कितना जमीन चाइना और पाकिस्तान ने हमसे लिया, कश्मीर से, लद्दाख से, उसके बारे में बात करो। एमओयू साइन करने के समय ओ चीन दे दो हमारी जमीन, बोला है क्या उस समय जाकर के? नहीं किए। मगर उनका look at that stupid self-confidence with which he stands up. उसे आप प्रोडक्शन वाला क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? अभी मैं पूछ रही हूं आपसे, उसी चाइना से, सॉरी नहीं, इसमें एक लाइन में बस ऐड कर रही हूं। अगर ये कह रहे हैं वो कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं रहा है, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, तो क्या ये गलत है? पहले आप जवाब दो। सेमीकंडक्टर का 2 बड़ा प्लांट, 3री बड़ा प्लांट भी हो रही है, वो क्या है? असेंबली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे, वो क्या है? इनोवेशन अगर नहीं होता इस देश में, वो सब आएगा क्या? मान लो असेंबली ही फोन का आज इतना एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? एक यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से इस देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? सो प्लीज, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूं आपको, विद विनम्रता से बोल रही हूं, आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल गांधी का कमेंट्स को उपयोग करिए, जरूर करिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है। मगर अगर उसमें दम है तो खड़े होकर के फैक्ट्स के साथ वो बोलना चाहिए। हल्के पुल्के में
नेगेटिव और नकारने वाले एटीट्यूड से, अरे इधर नहीं हो रहे, उधर नहीं हो रहे, क्या हुआ आपके 10 साल में? बोलो भाई, देश का नुकसान सिर्फ वो 10 साल नहीं है, उसके बाद हम 4-5 साल तक उसका झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे समय बिताया, टू रेस्टोर द बैंक्स। अगर उनके समय अंत के 13-14 के समय में बैंक का हालत कम से कम, इफ नॉट एट ग्रेट, समवॉट गुड रहता, हमारे टेक ऑफ इतना जल्दी हो सकते थे। मगर नो, बिकॉज इट वॉज इन सच अ बैड स्टेट, हम उसको सुधारने में ही 4-5 साल बिताया। एटलीस्ट नाउ इट्स कम बैक। लेकिन इकोनॉमिक सब फैक्ट्स भी वो लेना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट एन ऑपोजिशन। इस देश का एक, आई वुड थिंक, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा स्ट्रांग ऑपोजिशन रहकर सरकार को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए, जनता को उससे जानकारी मिलना चाहिए। मगर ये ऐसे ऑपोजिशन लीडर, आई एम सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, who thinks that if he stands up and speaks without facts also, the world will listen to him. I have 10 questions to ask of him, for which he'll never give a reply. I'm asking about this MOU, China. China में ये, China में इधर नहीं हो रहे। अरे भैया, tell, you went and signed ना, क्यों साइन किया, क्या साइन किया, उसमें क्या है, क्यों नहीं बोलते हो? So that's the finance minister's detailed counter to Rahul Gandhi. But let's get you some of the highlights of what the leader of opposition said as he began his motion of thanks by dismissing President Murmu's address, and then fired a score of charges at the government, from issues with regards to the economy to also foreign affairs. Here's a look at all that Rahul Gandhi leveled at the government, prompting a counter also. I would like to bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur. Pandemonium in Parliament on a day the House began discussion on the President's address on Monday. The reason I'm saying this, sir, is because the rules have been changed. Taking part in the debate, Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, spoke on a range of issues from defence to AI to caste census to the Maharashtra election results. Rahul Gandhi claimed that the army differed with Prime Minister Modi's statement on Chinese intrusions, provoking an angry reaction from the Treasury benches. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। मेरा अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, हम लोग शांति से सुनेंगे, ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। The Congress leader cited the caste census in Telangana to claim the OBC population could be as high as 50%. His claim that OBC MPs in the BJP were powerless led to a ruckus. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population, and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. Participation revolution in this country that we're going to bring. ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका, ये लीडर अपोजिशन को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। Rahul Gandhi claimed the government's Make in India initiative had failed. He admitted both the UPA and NDA governments had failed at job creation. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment.
While the India bloc hailed Rahul's speech as visionary, the BJP slammed the leader of the opposition for deviating from the crux of his debate. The opposition MP staged protests in the Lok Sabha earlier, demanding a discussion on the January 29th stampede at the Mahakumbh in Prayagraj, which claimed 30 lives and left 60 others injured. The demand was, however, turned down. Prime Minister Modi will reply to the debate on Tuesday. With Rahul Gautam in Delhi, Bureau Report, India Today. And Prime Minister Modi will be speaking in the Lok Sabha at 5 p.m. tomorrow, when he will be also replying to the motion of thanks. Now, this is where you will see, in fact, every political party getting a chance to respond. But with the kind of allegations that Rahul Gandhi is leveled firing at the government on multiple issues, it will be interesting to watch out for the Prime Minister's response tomorrow at 5 p.m. Now, like we told you, Rahul Gandhi raised a slew of issues, whether it was on foreign affairs, the economy, about how China was beating us, also about what's happening along our borders. He did trigger quite a bit of controversy with his comments. Let's run you through some of the excerpts of what Rahul Gandhi said. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. More voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the car census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country. And on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. So endless fireworks in Parliament, which is expected to continue tomorrow as well, with the Prime Minister expected to speak at 5 p.m. We'll track all the latest on that, but that's all we have time for in this edition of 6 p.m. Prime. Thanks for tuning in.